Good morning, team. There are many stocks. On Tuesday, we saw a very good recovery, and there are many stocks which have started to outperform the market, mainly in defense-related stock, mainly in shipping. Cochin Shipyard, Musgon Dock, and GRSE made a 52-week high. No, Musgon Dock was an all-time high, and you had Kalyan Jewellers making 52-week high. And hotel stock like Taj GVK, Indian Hotel, Lemon Tree, and Chalet is moving higher. And I think this up move will continue even in eating out or consumer spending. Many stocks are moving higher. Pratap Snacks is one. Safari Industries is doing very good. We expect Devyani to do very good. So people, spending is something which is happening. Taj GVK also started to move higher. Banking stock is looking good. HDFC Bank, HDFC Bank growth was very good. So I expect all quality banks to move higher. Federal Bank is our top pick, followed by City Union Bank and smaller banks. Smaller bank relatively can do better. Poonawalla FinCorp came with the provisional numbers where they said their disbursement is 3,720 crores, higher by 45%, and quarter-on-quarter basis, growth is only 8%. Their total AUM is 18,550 crores. Very small AUM, so we need to be careful. I think Bajaj Finance would be a better bet. Apollo Hospital. Now they bought Ayurved, a hospital for 26 crore, very small in Kerala. They have about 8 centers across India, mainly in southern part of India. So they will buy 60% stake in that Ayurved. It could be positive in the long term. The company is planning to expand Ayurved in a very big way. Happiest Mind fundraising for 1,400 crores. Approval has been taken. Bit negative for Happiest Mind. Normally, IT companies don't go for fundraising. DLF has sold 292 luxury homes, new homes at Gurugram for 1,800 crores. And the important point is in 8 days, they have sold this inventory to 1,800 crore. Sale was done in just 8 days. So I think DLF and other real estate stock will be in focus. Kolte Patel on Tuesday was doing very good. I think these stocks will start to outperform. In short term, we like SRF in chemical space looking very good for 8 to 12% upside. There is G20 meet which is going to come. So Mr. Punit Chatpal of Indian Hotel has mentioned that in his interview. So I think hotel stocks will do very good ahead of G20 meet, which is in this quarter. Z Sony merger, I think it is going to be very positive for Z. Z is something which will move. BDL in an interview said the order book is 12,000 crores, which is executable in 3-4 years, and pipeline is 22,000 crores. IRDA has approved a capital infusion in Aditya Birla Health Insurance, a wholly owned subsidiary of AB Capital, for 665 crores. That is 9.99% stake post equity infusion. So it will be done by a foreign fund. JSW Neo Energy holds 100% subsidiary of JSW Energy, has entered into a MOU with the government of Maharashtra for setting up 960 megawatt of capacity of hydro pumped storage project. It is in Raigarh, so positive for JSW Energy. RBL Bank came with their provisional numbers. The advances grew by 12% at 64,000 crores. Deposit grew by 5%. Quarter-on-quarter basis, the deposit growth is just flat. Here, the bulk deposit is more, so their NIMs will be always lower.
So RBL Bank, even in the banking thing, we would avoid this bank. Jio announces the launch of Jio True 5G beta trial version services. Telecom stocks have done very well. We like Bharti Airtel better than Reliance Jio because Jio has too many moving parts, whereas Bharti Airtel has very limited companies. Bajaj Finance AUM grew by 31%. Now the AUM is at 2,18,350 crores and deposit at 39,400 crores. Quarter on quarter basis, their AUM grew at 7%. AIA Engineering informed exchange for commencement of commercial production of mill liners under Greenfield project. The project is there in two places. One is Kerala and one is Ahmedabad, Gujarat. Now, total capacity green expansion is 50,000 metric ton per annum. It is very positive for AA Engineering. Now there are only two players in that commercial mill liners. So I think in India, AI Engineering is the only unique player, and they export to more than 100 countries. So with Europe shut down, I think this company will have an undue advantage. Reliance and Samina Corp complete previous JV to manufacture state-of electronic hardware in India, and this will take place at 100 acres campus in Chennai. So hardware manufacturing Reliance is entering, and if Reliance has to give product cheaper, they need to have this thing like this. The trade data came, provisional trade data, where our export was down by 3.52% at $32.62 billion. Our import was slightly higher by 5.44% at $59 billion. So their trade deficit is $26 billion. A bit negative. We need to improve our export and reduce our imports, which is not happening. HDFC, now the loan growth has been 23.5%. Now, which was one of the highest in the banking industry, but we like IndusInd Bank, ICICI Bank, Federal Bank, City Union Bank, Bank of Baroda, State Bank of India, and IDFC First Bank. So banking is something we like, and even chemical companies will start to rally. Now there are talks that due to European shutdown and the cold winter, caustic soda and soda ash or few products where demand will be high, where Tata Chemical and Gujarat Alkali Chemicals are company which will be a major beneficiary. And we also like SRF in this space. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी ये कॉल को एक बार हम लोग हिंदी में कर लेते हैं. हम लोगों ने ट्यूसडे को रिकवरी देखी तो हम लोग को लग रहा है कि जो स्टॉक से जो आउट परफॉर्म किए उसमें आपको ध्यान देना चाहिए. तो डिफेंस स्पेस में जो शिपिंग है उसमें कोचिन शिपयार्ड है, GRSC है, मजगांव डॉक है जो 52 वीक हाई पे है. इवन मजगांव डॉक भी ऑल टाइम हाई पे है, तो ये स्टॉक के ऊपर ध्यान दे सकते हो. कल्याण ज्वेलर्स भी है जो 52 वीक हाई पे चल रहा है. होटल स्पेस में इंडियन होटल है, लेमन ट्री है, शैले होटल है जो हायर मूव कर रहे हैं. और इसके अलावा जो कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर कर रहा है तो QSR सेगमेंट भी हम लोग को अच्छा लग रहा है. तो देवयानी है, प्रताप स्नैक्स है, ये स्टॉक आप देख सकते हो. सफारी इंडस्ट्री भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. ताज जीवी के भी मूव हायर हो रहा है. बैंकिंग स्पेस में हमारा जो टॉपिक है वो फेडरल बैंक है, उसके बाद सिटी यूनियन बैंक है. स्मॉलर बैंक में जो रिलेटिवली स्मॉलर बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे. उसके अलावा इंडसइंड बैंक है, ICICI बैंक है, फेडरल बैंक, SBI और IDFC फर्स्ट बैंक भी है जो बैंकिंग स्पेस में आप देख सकते हो. DLF जो कंपनी है उन्होंने 292 लग्जरी रूम गुड़गांव में सोल्ड किए हैं और ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने ये सेल है जो 8 डेज में किया है. तो DLF भी काफी अच्छा स्टॉक है. इसके अलावा जो
रियल एस्टेट रिलेटेड जो कंपनी है वो फोकस में रहेंगी, तो कोल्टे पाटिल में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो आप ये स्टॉक के ऊपर ध्यान दे सकते हो। उसके अलावा केमिकल स्पेस में भी हम लोग को रैली लग रही है, क्योंकि यूरोप में शटडाउन आया है और कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश की जो डिमांड है वो हाई होते कारण टाटा केमिकल एक स्टॉक है, उसी में एसआरएफ है, गुजरात अल के लिए स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। देन नेक्स्ट अपडेट है आईडी के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड ने फंड रेज के लिए अपील किया था, तो ये एक स्लाइटली नेगेटिव रहेगा कंपनी के लिए। अपोलो हॉस्पिटल है, उन्होंने आयुर्वेदा सेंटर जो केरला में है उनमें स्टेक बाय किया है, वो आगे जाके कुछ 60% स्टेक है वो आयुर्वेदा सेंटर में बाय करेंगे, तो ये एक उनका जो प्लान है कि वो आगे जाके ये आयुर्वेदा इसमें एक्सपांड करेंगे, तो ये आगे जाके पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है पूनावाला कॉर्पोरेशन के ऊपर। कंपनी के जो बिजनेस अपडेट्स आए थे उसमें उनका जो डिपॉजिट्स है सॉरी डिसबर्समेंट है वो कुछ 372 के अराउंड कुछ है, ग्रोथ है वो 8% से हुई है, एयूएम है वो 18,550 करोड़ है, ये उनका स्मॉल एयूएम है, तो यही स्पेस में आप एक बजाज फाइनेंस बेटर रहेगा, तो आप बजाज फाइनेंस एक देख सकते हो स्टॉक। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडियन होटल के जो मैनेजमेंट के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला कि G22 मीट होने वाली है ये क्वार्टर में, तो ये होटल स्टॉक जो है वो फोकस में रहेंगे। हम लोग को बार बार बोल रहे हैं कि होटल स्टॉक्स है, क्योंकि लोग अभी कोविड के बाद बाहर घूमना स्टार्ट कर दिया है, स्पेंड करना ज्यादा कर दिया है, तो स्टॉक्स में होटल स्पेस में इंडियन होटल है, शैले होटल है और लेमन ट्री होटल है, ये स्टॉक को आप देख सकते हो। मर्जर जो है जी और सोनी का वो जी के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो जी स्टॉक यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी है जो होली ओन सब्सिडरी है जीएसडब्ल्यू एनर्जी की, उन्होंने एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जो 960 मेगावाट हाइड्रो पंप स्टोरेज रायगढ़ में करने वाली है, सेटअप करने वाली है, तो ये पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है आरबीएल के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स एडवांस जो है वो 12% से इंक्रीज हुआ है और डिपॉजिट्स है वो 5% से ग्रू हुए हैं, फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग देखें तो फ्लैट ही है और उनका जो नीम्स है वो लोअर है, पर बैंकिंग स्पेस में हम लोग बोल रहे हैं कि आरबीएल बैंक को अवॉइड करना चाहिए, तो ये आप ध्यान दे सकते हो, बैंकिंग स्पेस में हम लोग बोल रहे हैं कि आरबीएल बैंक को अवॉइड करना है। नेक्स्ट अपडेट है जियो ने अनाउंस किया है 5G स्पेस में ये करने के लिए, तो हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में भारती एयरटेल रिलायंस जियो के ऊपर पॉजिटिव है। बजाज फाइनेंस के भी बिजनेस के नंबर्स आए थे, जो उनका एयूएम है वो 31% से इंक्रीज हो गए 2,18,000 के अराउंड कुछ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका एयूएम 7% से इंक्रीज हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर्स है। नेक्स्ट अपडेट है जो एआई इंजीनियरिंग जो कंपनी है उनको कमर्शियल प्रोडक्शन ग्रीन लाइनर जो है वो केरला और अहमदाबाद के लिए अप्रूवल मिला है और ये कंपनी जो ग्लोबल इशू चल रहा है उसके कारण ये कंपनी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में, तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। देन ट्रेड डेटा के नंबर्स आए थे तो उसमें एक्सपोर्ट है वो कुछ अराउंड 3.5% से नीचे है और जो इंपोर्ट है वो 5.44% से इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपोर्ट जो है $32.6 बिलियन है और जो इंपोर्ट है वो $59 बिलियन है, तो ट्रेड डिफिसिट हमारा निगेटिव है, तो ये एक उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। देन नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस जो है उन्होंने समायना के साथ एक जीवी डील की है, जो मैन्युफैक्चर करेंगी बिल्ड और मैन्युफैक्चर करेंगी इंडिया में, जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया में रेडी करेंगी। नेक्स्ट अपडेट है जीएसपीएल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के ऊपर, वो एक्सपेक्ट उनके नंबर्स बिजनेस के अपडेट आए थे उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हाई सेल्स सिंगल डिजिट सेल्स है जो ग्रोथ वॉल्यूम के साथ, देन उनका जो पर्सनल केयर है उसमें जो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ उन्होंने मेंटेन रखी हुई है, होम केयर विटनेस भी अराउंड क्लोज टू मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आ सकता है। इंडिया में जो एफएमसीजी इंडस्ट्री वो कंटिन्यू सॉफ्ट रहेंगी ये क्वार्टर में, अर्बन मार्केट है वो आउट परफॉर्म कर रहा है रूरल मार्केट से। इंटरनेशनल बिजनेस पे अपडेट है कि उनका इंडोनेशिया का जो बिजनेस है वो एक्सपेक्ट है कि अर्ली डबल डिजिट करेंसी सेल डिक्लाइन और उनका जो सिंगल डिजिट सेल ग्रोथ रहेगा, और लैटिन अमेरिका बिजनेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी सेल्स ग्रोथ होगी अपवर्ड 30s अराउंड।
देन कंपनी के मार्जिन के ऊपर बोले तो उनका जो EBITDA है वो डिक्लाइन होगा मिड टीन, क्योंकि वो हाई कॉस्ट मटेरियल्स ड्यूरिंग क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 23 है उसके कारण, और जो वीक परफॉर्मेंस है इंडोनेशिया में उसके कारण। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और जो टारगेट प्राइस है वो 1000 है। एक्चुअल है वो हेल्प कर रहा है, मतलब वो डिलीवर एक्चुअल में एक रेस कर रहा है जो डिलीवर करते हैं हाउस होल्ड गुड्स तो ग्रोसरी स्टोर में, वो रिड्यूस करेंगे टाइम जो ऑर्डर रिसीव करने के और डिलीवरिंग करने में। तो ये कम्पीट करेगा जो ऑनलाइन ग्रोसरी होलसेलर्स है उसके लिए। तो ये एक लोअर मतलब बोलते हैं ना कि ये एक स्टेप्स जो है वो लीड करेंगे उनका जो लोअर कैंसिलेशन ऑर्डर्स है और जो इन्वेंट्री इंक्रीज है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में। तो करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है जो टारगेट प्राइस है 2567 लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेमन ट्री है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ओपनिंग करेंगे कीज लाइट जो लेमन ट्री का होटल है श्री कन्या विशाखापट्टनम में। ये सेकंड प्रॉपर्टी है ये ग्रुप की ये सिटी में, और उन्होंने ये स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया है गुजुवाका में। ये होटल है 44 उसमें 44 वेल अपॉइंटेड रूम्स और सूट्स रहेंगे। और ये उसके अलावा इसमें मल्टी कजिन कॉफी शॉप रहेगा कीज कैफे, उसके अलावा वो वेल अपॉइंटेड वेन्यूज मतलब फंक्शंस के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए और प्राइवेट इवेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करेंगे। होटल में कैटर के बहुत बिजनेसेस है, ट्रैवल और टूरिस्ट दोनों, तो ये पॉजिटिव है लेमन ट्री के लिए। और स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 78 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। HCL जो कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर है वो ब्राजील में स्टार्ट करेंगे और हायर करेंगे अराउंड 1000 पीपल को जो स्केल अप करेंगे ऑपरेशन वो रीजन में, और वो ग्लोबली क्लाइंट्स को सर्व करेंगे। तो ये एक अच्छा रहेगा HCL के लिए। ये रीजन में वो प्रोवाइड करेंगे बेस्ट टैलेंट मतलब टैलेंट और बेटर कॉस्ट में। तो ये हेल्प ही होगा कंपनी का जो ऑफशोर रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी बेटर रहेगी। करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है जो टारगेट प्राइस है 924 लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देन नेक्स्ट अपडेट है जी के ऊपर। CCI ने अप्रूव किया है कि जो उनका मर्जर है जी और सोनी का, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके, और एक उसमें एक मॉडिफिकेशन ये कि जी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा उनका जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है वो। और इसके अलावा हम लोग को लग रहा है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है जी के लिए, क्योंकि हम लोग व्यूवरशिप के हिसाब से देखें तो जी और सोनी का जो कंबाइंड एंटिटी है वो अराउंड 40% शेयर है ऑल जनरीज में, एक्सेप्ट जो मूवी है वो 50% शेयर है। तो ये मर्जर के बाद जो सिनर्जीज है टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग और मार्केटिंग, इवन एम्प्लॉय कॉस्ट फ्रंट में और हाइक प्रोवाइड करेंगे जो प्राइस है कि वो अच्छे से एबिलिटी और एड्स में, और बेटर बार्गेनिंग पावर भी रहेगी। तो ये कंपनी के लिए जी के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है इंडसइंड बैंक के ऊपर। सेबी ने पेनल्टी लगाई है 1 करोड़ की, क्योंकि उन्होंने जो लोन है जो सैंक्शन किया था सीजी ग्रुप को 2017 में। तो ये पेनल्टी लीफे अकाउंट में कमीशन और ओमिशन ये जो लोन पे किया था अर्लियर उसके कारण है। तो एक्सचेंज ने बोला है कि ये एग्जामाइन करेंगी एंड देन अपील करेंगी अगेंस्ट जो ऑर्डर है ड्यू कोर्स में उसके कारण। देन स्लाइटली ये निगेटिव है बैंक के लिए, बट इतना इम्पैक्ट नहीं होगा स्टॉक के ऊपर और उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। करंटली स्टॉक के ऊपर हमारा बाय रेटिंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और जो टारगेट प्राइस है वो 1216 है। Technical and derivatives update. Yesterday, if we see in Tuesday session, we witnessed open on a positive note and with a strong, getting a strong candle on the first hour that is crossing 17,000 level, and from that levels more shorts covering was triggered, and it which led to one again a range of 160 from that level. So we witnessed massive short covering in both the indices in the Nifty and Bank Nifty, and we jumped over 17,200, which was earlier acting as a hurdle. Now the key thing is that if we today in the opening session, if we cross over 17,300 to 350 zones, then we can witness again further up to 17,400 and 17,500. So that this should be the level where Nifty could find some hurdles going forward. On the sectoral front, if we see, then all the indices closed in the green metal and private banks were the top leaders. And in the Bank Nifty also, if you see, the Bank Nifty also traded with a positive bias and reclaimed 39,000 levels. For Bank Nifty, 40,000 would be a crucial level where it could find some hurdles. 39,500 and 40,000, that could be the range over there. And from there, we could witness some hurdles of profit booking. And hourly and daily, we are witnessing a positive setup in both Nifty and Bank Nifty as of now.
So for the day, we remain bullish for the day, and we should witness that. And we are seeing that SGX is also opening positively by 85 points on that. And on the options front, if we see, then Bank Nifty put trading is seen at 39,000 and call trading is directly jumped over to 40,000 level. And in the Nifty, if we see, then put rating, we are seeing major put rating at 17,000, 17,101 level. And in the call options, if we see, then 17,500 and 18,000 are the two ranges where it could end up over there. And on the futures front, we witnessed short covering to the tune of 6.5%. And the advanced decline ratio was also much positive with 190 stocks on the gaining side and only 8 stocks on the losing side. Vis-a-vis on the Bank Nifty also, we had witnessed short covering that is a tune of 5%. And the top three longs were seen in CUB, IDFC, First Bank, and Deltacom, whereas short beta was seen in GSPL, Crompton, and Dabur. And on the FIS statistics, if you see, then FI also reduced their short positions by 35,000 contracts. So they are net short by only 91,000 contracts as of now, and the long short stand is 19%. The cash market also, they were buyers with 3944 crores in cash, and DIO is also buyers with 945 crores in cash. So that's it from mine. I'll hand over to Bunty sir for more updates. Thank you, Hitendra. Good morning, sir. Good morning, team. Few updates from research side. So firstly, starting with the GCPL or Godrej Consumer Products. So firstly, they have shared its Q2 FY23 business data, which is starting with the Indian business. In Indian business, if you see, company expects to deliver high single-digit sales growth with a mid-single-digit volume drop. In that, personal care should maintain a double-digit growth. Home care should witness close to mid-single-digit growth. Indian FMCG industry continue to remain soft during the quarter, and if you see, urban markets have outperformed the rural market. Secondly, in the international business, in Indonesia, company expects double-digit constant currency sales decline and high single-digit sales growth. GAUM continued the growth momentum across countries, and Latin America business expecting constant currency sales growth in upwards of 30%. And also, if you see, expects double-digit sales growth ex Indonesia hygiene competitor. Lastly, on the margin front, company expects that EBITDA to decline by mid-teen due to high cost materials during Q2 FY23. With significant correction in commodities like palm oil derivative and crude oil, company expects to recover in consumption and gross margin expansion in the coming quarters. We are very much bullish and have a buy rating on the stock with a target price of 1,000 rupees. Secondly, on the HUL, HUL has said they are raising to deliver household goods to grocery stores by reducing the time it takes from receiving an order to delivering it, which should help to compete with the online grocery wholesaler. This step should lead in lowering cancellation of orders and increase inventory at distributor level. We have a hold rating on this stock. Thirdly, Lemon Tree. Lemon Tree has announced the opening of Key Light by Tree Hotel, Sri Kenya, Vishakhapatnam. This is the second property of the group in this city, strategically located near Gauzawaka. The hotel features 44 well-appointed rooms and suites. This complements the stay in a multi-cuisine coffee shop. The hotel caters to both business travelers and tourists. So this is very much positive, and with we have a target price of 78 rupees on this. HCL has announced that it establish a new technology center in Brazil and hire around 1,000 people operations in this region to serve global clients. This bodes well for HCL. IT sector, we already said we have a hold rating on overall IT sector. Now on HCL, we have 2.4. Second last, Z. Yesterday, CCI has approved the merger of G and Sony with a few modifications proposed by the entity. One of the modifications is that Z would be excluding a major general entertainment channel. We believe it's a positive development for Z because if we look, both the entity command around 40% share in all general except movie where it has a 50% share. So this seems to be very much positive in favor of the stock. So keep
Lastly, on the IndusInd Bank, IndusInd Bank has shared that RBI has imposed a penalty of 1 crore for a loan which was sanctioned to CG Group in 2017. Although it does not have much of an impact on the financials, on a IndusInd Bank, we remain very much positive. I have a buyer rating on the stock with a target price of 1260. That's it from my side. Over to you, sir.